Yes, so this session is for all the students who are using our reference books. What is the exact manner of using the reference book? That is what we'll discuss. So I'm talking of CAT. So CAT में क्या है? There are three sections we know: verbal, then DI, and then quant. Now, point one, straight to the point I'm discussing. सबसे पहले you are supposed to understand the curriculum, the paper pattern. अब जैसे वर्बल है, वर्बल में कैट में देयर इज नो ग्रामर, देयर इज नो वोकेबुलरी क्वेश्चंस पर से, सो व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम ऑन दोस थिंग्स? हाउएवर, टू डू रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपका वोकेब थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सो यू हैव टू वर्क ऑन वोकेब इंप्रूवमेंट. फॉर दैट देयर इज अ सेपरेट लेक्चर, वो आप देख लीजिए कि वोकेब कैसे इंप्रूव करना है. बट ये बुक्स कैसे यूज करने हैं, दिस इज व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. ठीक है, सो लेट्स से आई हैव टेकन दिस वर्बल का बुक गाइस. फर्स्ट मिस्टेक पीपल मेक इज सीधा कैट के एक्चुअल पेपर इसमें है. सो कैट 22, कैट 23, कैट 21 सब एक्चुअल पेपर्स हैं. राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू. तो ये देखिए, ट्राई एंड शो इट टू यू, राइट, इफ इट इज पॉसिबल. ये देखिए, सो हियर दिस इज कैट 22 स्लॉट 1 दिया हुआ इसमें. ठीक है, बच्चा ज्वाइन करता है, he gets this book and immediately अरे चलो पैसेज वन सॉल्व करके देखते हैं कैसा है. राइट, देन देयर इज कैट 21, कैट 20, इसमें सब एक्चुअल क्वेश्चंस ऑफ लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 years of cat mentioned है, with answers, explanation and everything. Never do this, guys. Never ever do this, howsoever good you might be in studies. ठीक है, so let's say you are already very good in verbal. आपने लास्ट ईयर अगर कैट दिया हुआ है, आपको 90% आला परसेंटाइल आया हुआ, देन डू वट एवर यू वांट, राइट, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. बट इफ यू आर स्टार्टिंग ए फ्रेश, प्लीज कभी भी एक्चुअल पेपर मत देखो इनिशियली. ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स, राइट. सो what I want all our students to do is इस बुक को कैसे यूज करना है. all because these are, say I'll be talking about all these three books, right? Let's see. Verbal, if you see, if you open the book, there are like daily RC kind of thing, right? If you go in this book, you will find out there are, lot of RCs given, almost 50-60 different RCs given. And there it is written that, daily basis पे आपको क्या करना है. I'm not talking of actual CAT RCs, right? There are separate RCs given. I'll show this to you right away. If you see, there are, it's, there are so many RC passages here, almost might be 150, might be 200 passages sub. Okay, it tells you in the book also, it is written how do you read an RC passage, how do you analyze an RC passage. And people who have attended my lecture, especially on RC, they know that RC is all about comprehending the paragraph, not about fast reading it also. Go through that lecture of mine, then you'll understand it better. Today it is more about इसको क्या करना है, बुक्स को हमें कैसे यूज करना है, राइट. सो आफ्टर गोइंग थ्रू द नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल, प्लीज प्लीज डेली 2 RCs करो ना, without bothering about speed. Focus on, can you get correct answer, can you understand the RC paragraph in one go. Take 40 minutes per RC, कोई problem नहीं है. Because with so many RCs, if on a daily basis when you solve it, automatically your speed will increase, right? Then para jumble is difficult, guys. This is something which I've always told, that getting correct answer in mocks, in actual question might be difficult. It's not going to be easy. But yes, इसमें सब है दिया हुआ, आप पढ़ो कैसे. Let's say every 3 days solve 3 or 4 questions of para jumble, right? So in same thing with para summary, if you're solving para summary, इसमें बहुत सारे para summary के questions हैं. My point is, before solving actual questions of CAD, can you solve the questions given in here? आप पहले 1 महीने तक वो तो करो, and then go to the actual questions which are given, not the actual CAT, right? So this is as far as, let's say, verbal is concerned. Now इसमें grammar भी है, the tone, words and so many other things are given. पढ़ते रहो, I'm not saying वो पढ़ो मत, but CAT में नहीं आता. So that will help you improve your verbal per se.
राइट, करो। बट कैसे करना है, द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई टोल्ड इज, कैट के क्वेश्चंस बाद में करो, पहले दूसरी चीजें तो प्रैक्टिस करो। नाउ, नाउ आई टॉक अबाउट क्वांट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। आई टेक अप्रोक्सीमेटली 5 minutes इन एक्सप्लेनिंग दिस। बहुत मोटा है, राइट। सो ऑफन पीपल से कि अरे सर आप बुक्स 4 ही बुक्स देते हो, इतना वो, अरे इतना मटेरियल आप ये कर भी लो तो बड़ी बात है, राइट। राइट, नाउ माय पॉइंट इज, नो योर सिलेबस वेल। जब क्वांट आप पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम, यू विल सी ऑलमोस्ट 200 odd pages here only for number system. See, this whole first chapter is number system, almost 160, 180, 200 pages. The number of questions in last 6-7 years we are seeing जो कैट में आ रहे हैं वो around 1 or 2 questions only from number system. हमें बुक में सब इंक्लूड करना पड़ता है, हमें पढ़ाना भी पड़ता है. The reason for that is 41 question comes. But if you look at the arithmetic module, the percentages, ratios, profit and loss, average allegation, that comprises of almost 9 to 10 questions. Out of 22 questions, there are 9 to 10 questions only from arithmetic. And if you look at the number of pages of only arithmetic, which is like percentage, ratio, averages, allegation, profit and loss, simple interest, compound interest, the number of pages is only 200. So the whole number system is 200 pages. The whole arithmetic is around 200, 250 odd pages in this, let's say. वो पहले कर लो ना percentages यार, arithmetic पहले कर लो ना. This is point one. Point two, how do you do this, right? So if you have already attended the lectures, fantastic. Lectures के बाद में directly इसमें पढ़ना चालू करो. Preferably, अगर आपने नहीं भी lecture attend किया, you got our LMS, राइट. कॉन्सेप्ट्स पहले खुद से पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बाय सम वीडियो और बाय सम फिजिकल लेक्चर, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. देन प्लीज सॉल्व introductory exercise in the beginning. Please solve LOD level 1 exercise in the beginning, whichever chapter you are doing. The reason, same mistake which people do, they'll directly start with नहीं कैट लेवल क्वेश्चन मेरे को पहले करना. अरे तू छोड़ देना, पहले एग्जाम्पल्स करना इसके. First solve examples, introductory exercise guys, that will give you confidence कि हाँ भाई मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. वो इजी होंगे, दे माइट नॉट बी कैट लेवल. देन यू रीच एलओडी लेवल 1, वो भी शायद कैट लेवल नहीं होगा, दैट इज एनमेट एंड स्नैप लेवल. बट आई गारंटी आउट ऑफ द 22 क्वेश्चंस यू विल डेफिनेटली हैव 5 to 6 questions of LOD level 1 in CAT exam. So once you are done with LOD level 1, let's say you are doing chapter ratio and proportion, पहले इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज करो, इजी क्वेश्चन करो, भले तुम्हें कितने भी अच्छे से आते होंगे. देन गो टू एलओडी लेवल 1 एंड देन एलओडी लेवल 2. ट्रस्ट मी, एलओडी लेवल 3 इतना नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा. एलओडी लेवल 3, इफ एट ऑल यू वांट टू डू इट राइट एट द एंड, right? This will give you confidence. I hope you understand what I'm saying, right? Now this will have all geometry, probability, some में. But please first finish arithmetic. वो पहले finish करो. Introductory exercise पहले करो. Remember this little thing. Now let us talk about logic and DI. And trust me, over the years, at least last 6-7 years, what we have been seeing is it's more data interpretation. Yes, there are logic sets, but they are also DI based, which means DI is important. Now my point in this, very important. बच्चे क्या करते हैं, वही सीधा सर एलआरडी है ना, तो देयर विल बी 5 सेट्स 4 क्वेश्चंस, ही सीधा वही चालू करते हैं. एंड दैट्स थिंक की कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन टेस्ट, सिलॉजिज्म, इनपुट आउटपुट तो इररिलेवेंट ना, वो तो आता ही नहीं है ना कैट में. आई ऑलवेज से गाइस, प्लीज डू दोस चैप्टर्स आल्सो. आपका लॉजिक इंप्रूव होगा. सिलॉजिज्म, कोर्स ऑफ एक्शन, अजम्पशन, कंक्लूजन, इनपुट आउटपुट हुआ, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज, इट इज ऑल देयर, सब है इसमें. कम होगा बट इट इज देयर, ये बुक में सब है. प्लीज वो भी करो. इट विल टेक हार्डली सम टाइम बिफोर जंपिंग टू द एक्चुअल कैट लेवल सेट्स. नाउ line graph, bar graph, it doesn't come in CAT. But can I say all these topics of data interpretation, line graph, bar graph, then in logic, those number series, word series, coding, decoding, syllogism, course of action, assumption, conclusion, they come in snap and unmet. तो वहां पर तो काम आएगा.
I hope you understand this now. And once you're done with this, then go to higher level CAT examples. Directly don't jump to CAT level examples. So this is how you should be using these books, guys. Okay. So that's it. Thank you. Bye-bye.